are going to begin with the lesson number 11 of your class 5 English, that is the star and the lilies. So let's begin with this lesson. Long ago, there was a time when this world was filled with happy people. बहुत साल पहले एक ऐसा टाइम था जो ये वर्ल्ड था जिससे फिल था खुश लोगों से फिल था, भरा हुआ था. When all the nations were as one and the crimson tide of war had not begun to roll. So सारे मतलब पूरे nations एक ही थे और crimson tide of war जो था वो बिगिन नहीं हुआ था रोल होना. Nobody was in want, for there was plenty of food in the forest and on the plains. So किसी को भी किसी चीज की मतलब ज्यादा जरूरत में कोई नहीं था क्योंकि काफी खाना था फॉरेस्ट में भी और प्लेन्स में भी. Diseases were unknown, कोई बीमारी नहीं होती थी. The animals, whether in the forest or in the fields, animals या तो फॉरेस्ट में रहते थे या खेतों में रहते थे, जंगलों में या खेतों में, or were tame. They came and went at the bidding of men. The spring season prevailed all round year. Spring season पूरे साल चलता था. And there was no place for winter, for its cold blast, for its unhealthy chills. Winter की कोई जगह नहीं थी cold blast के लिए, unhealthy chills के लिए. Every tree and bush was laden with fruit. हर tree और bush के पेड़ fruits रहते थे. Beautiful flowers were covered the earth like a colorful carpet. Beautiful flowers ने earth को cover कर रखा था एक सुंदर से carpet की तरह. The air was laden with their fragrance. पूरी air में क्या थी? Fragrance रहती थी, खुशबू रहती थी. And the redolent with the songs of wedded warblers. So और आवाजें songs की किसकी आती थी? Wedded warblers की. The birds in those days were more beautiful with their beautiful song and plumage than now. उस टाइम पे जो बर्ड्स की आवाज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती थी, वो ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती थी आज के मुकाबले. They flew freely from branch to branch singing their melodious songs. वो branch to branch फ्लाई करती थी, मतलब एक सुंदर सा मेलोडियस गाना, मीठा सा गाना गाते हुए. There were none to harm them. कोई भी नहीं था जो उन्हें हार्म कर दे. It was a time when earth was like a paradise. वो एक ऐसा टाइम था जो आज की किसकी तरह पैराडाइज की तरह था. And men were really happy, और लोग खुश थे. They lived among the nature, enjoyed its many blessings. वो नेचर में रहते थे और उसकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते थे. During the day they roamed here and there in search of food. डे टाइम में वो इधर से उधर घूमते थे किसके सर्च में? फूड के सर्च में. And at night they met on the wide green beneath the heavenly world. नाइट में वहाँ कहाँ मिलते थे? मतलब beneath the heavenly world, मतलब आसमान के heavenly world के नीचे सोते थे. So they watched the stars. वो stars को, सितारों को देखते थे. They loved to gaze at them. वो उन्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. For they believed them to be the residents of the good, so who had been taken home by the Great Spirit. One night they saw one star. एक दिन उन्होंने एक स्टार देखा that shone brighter than all stars. जो all others से बहुत ज़्यादा चमक रहा था. Its location was far away in the south. वो कहाँ था? South में था, near a mountain peak. For many nights they observed it with wonder. हर रोज उसे wonder से देखते थे वो. Many of them doubted that the star was as far distant in the southern skies. बहुत लोग डाउट करते थे वो बहुत थोड़ी दूरी पे साउथर्न स्काई में ही है. And it seemed to be while there were others thought it was very near. कुछ सोचते थे बहुत पास है, just above the mountain peak, बस mountain peak के ऊपर. They argued hard but could not arrive at any conclusion. वो बहुत ज़्यादा argue करते थे but किसी conclusion पे नहीं आए. At last they decided to send some warriors to go and see where it was. लास्ट में उन्होंने कुछ warriors भेजे देखने के लिए कि वो देख के आओ कहाँ है. So the warriors went to find out the truth and returned. तो warriors कहाँ गए? Truth देखने गए और वापस आए. They said that it was quite near and it appeared strange and somewhat like a bird. ये बहुत पास है और अब एक bird की तरह appear हो रहा है. So a committee of the wise men were formed to know more about it. एक committee form हुई एक wise men की, अच्छे लोगों की, जो मतलब इसके बारे में जानने के लिए. And it possible to ascertain the meaning of the strange phenomena. They feared that it might be the omen of some disaster. उनको डर लगता था ये omen होगा कुछ disaster का. Some thought it a precursor of good. कुछ सोचते थे precursor है God का, other of evil. Some suppose it to be the star spoken by their forefather at the
forerunners of dreadful war. वो कुछ को लगता था ये उनके forefathers हैं, forerunners थे जो dreadful war के. Many days passed by, but the mystery remained unsolved. बहुत दिन हो गए, but कोई इस mystery को solve नहीं कर पा रहा था. One night, the chieftain of the community had a strange dream. Chieftain को एक अजीब सा सपना आया, in which a beautiful maiden came and stood beside him. एक beautiful maiden आती है और उसके पास खड़ी होती है साइड में. She said, "Oh good man of the earth, I am charmed with the land of yours." मैं खुश हूँ तुम्हारे land से. Its flowers, its birds, its rivers, its beautiful lakes and its mountains clothed with green. I have left my sister in yonder world to dwell amongst you. मैंने अपनी sister को छोड़ दिया है यहाँ पे. Please ask your wise and great men whether they would allow me to stay here. If yes, where I can live and see the happily race continually. So अगर वो अपने wise men से पूछो क्या वो मुझे यहाँ रहने देंगे, अगर हाँ तो मैं कहाँ रहूँगी, मेरे लिए एक अच्छी सी जगह दो जहाँ मैं इस रेस को अच्छे से देख सकूँ. Also please ask them what form I shall assume in order to be loved by one and all. So मैं किस फॉर्म में आऊँ कि जिससे मुझे सब प्यार करें. The chieftain woke up. एकदम chieftain जग जाता है. On stepping out of his lodge, he saw the star yet blazing in the accustomed place. उसने जैसे वो अपने लॉज से बाहर निकल रहा था, उसने स्टार को अब भी देखा जो ब्लेज कर रहा था कहाँ पे, एक accustomed place पे. At early dawn, the announcers was sent. एक early dawn में क्या हुआ, एक announcer भेजा गया round the camp to call every wise man to the council lodge. हर wise man को council lodge में बुलाने के लिए. When they had met the chieftain related his dream. फिर वो उन्होंने chieftain से पूछा कि बताओ, chieftain की dream के बारे में बात की. They concluded that the stars had been seen in the south. तो उन्होंने conclude करा कि stars को south में देखा जाता है. And fallen in love with mankind. वो fall हो चुका है mankind से love में. And she was desirous to dwell with them. The next night, with 5 tall, noble-looking, adventurous, brave warriors were sent to welcome the stranger to the earth. 5 किसको भेजा गया? 5 tall, noble-looking, adventurous, brave warriors को भेजा गया तो वेलकम करने के लिए स्ट्रेंजर को अर्थ पे. They went near the mountain peak. Mountain peak के पास गए in the south and offered her a twig of olive tree. किसकी twig दी? Olive tree की twig दी और as a token of love from the people on the earth. They were overjoyed when the stars accepted their gift. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई जब stars ने उनके gift को accept करा and returned happily to their village. और अपने गांव वापस आ गए खुश होके. As they were returning, the star with expanded wings followed and hovered with their homes. जैसे ही वो वापस आए थे, स्टार्स ने अपने एक्सपेंडेड विंग्स के साथ उनको फॉलो करा, हार्वर्ड कर उनके होम्स तक till the dawn of day. Again she came to the chieftain in a dream. फिर से उस chieftain पे आती है सपने में and requesting him to suggest the place where she should live and what form she should take. और रिक्वेस्ट करी उससे chieftain से कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे को प्लेस दो और where she and what form she should take और क्या फॉर्म लेनी चाहिए उसको. When in the morning the chieftain put forth the issue before the council of wise men. फिर से उसने ये issue रखा council of wise men में. They suggested many places on the top of giant tree. उन्होंने बहुत सारी places suggest किए top पे giant tree के, over the mountain peak or in the colorful flowers. Since even after long discussion they could not decide over the matter. ये decide नहीं कर पाए कि कहाँ रखिए. They asked the star to choose a place herself and she did so. उन्होंने स्टार से बोला कि अपना प्लेस खुद से चूज कर लो और ऐसा उसने किया. At first she dwelt in the white rose of the mountain. पहले कहाँ गई वो white rose में mountain के, but there she was so buried that she could not be seen. वो इतनी buried हो गई कि उसको कोई देख नहीं पाया. Then she went to the grassy meadows. फिर वो कहाँ जाती है? grassy meadows में जाती है. But she feared the hoof of the buffalo. उस hoof of the buffalo से डर गई. She then sought the rocky cliff. वो रॉकी क्लिफ पे जाती है, but there she was so high the children whom she loved most could not see her. तो फिर वो इतनी ऊंचाई पे हो गई रॉकी क्लिफ पे कि चिल्ड्रन जो उसको लव करते थे वो नहीं देख पा रहे. I know where I shall live. मुझे पता है मुझे कहाँ रहना है. Said the bright star at last. I know from where I can see the gliding canoe of the race. कहाँ से मैं सबको देख सकती हूँ. I most admire children. मुझे सबसे ज्यादा पसंद है children. Yes, they shall be my playmates. वो मेरे playmates होंगे जिनके साथ मैं खेलूंगी. And I will kiss their slumbers by the side of cool lake. मैं उनके slumbers को किस करूंगी? किसके side of cool lake से. The nation shall love me wherever I am. और nation मुझे पसंद करेगा जहाँ भी मैं होंगी.
With these words, the bright star alighted on the water of the cool lake. कहाँ लाइट हुई? Water of the cool lake में, where she saw reflection in the water. जहाँ से वो अपना reflection देख पा रही थी water में. The next morning, thousands of white clouds were seen on the surface of the lake. Next morning क्या हो? Thousands of white clouds दिखे हमें कहाँ पे? Surface of the lake पे. And the people gave them the name white lily. और तो people ने उन्हें क्या name दिया? White lily. The stars live in the southern skies. तो ये star कहाँ रहता है? Southern skies में. Her brothers can be seen far off in the cold north. Spelling of brothers is wrong over here. उसके brothers कहाँ दिख सकते हैं? Cold north में दिख जाते हैं. Hunting the great bear. किसको hunt करते हैं? Great bear. While her sisters watch her in the east and west. और उसके sisters east और west में होती हैं. So dear children, when you see the lily on the water, जब children आप देखो लिली कहाँ पे water पे, take it in your hand and hold it to the skies. और अपने हाथ में लेके hold करो sky की तरफ. That it may be happy on earth. That is may be happy on earth as it two sisters. The morning and the evening stars are happily in heaven. जो morning और evening star है, जैसे वो happy है heaven में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.